गाइस हम वापस आ चुके हैं और हम यहाँ पे थे कि इस बंदा बोल रहा है सिंपल रखना चाह रहा था, पर कब से इसने सिंपल नहीं करा है, बहुत एग्जैजरेट भी किया है, एक ही चीज को रिपीट किया है। पर कोई The नहीं, keys have to be unique, अब but the values इनम्स can पे be जाएंगे। complicated. We have to specify the type for the key and its value. And well, everybody, those are hash maps in Java. All right, let's do this thing, everybody. Today we're talking about enums. Enums is short for enumerations. They're a special kind of class. They represent a fixed set of constants. By using enums, they improve code readability and are easy to maintain. One of the major benefits of enums is that they're more efficient with switches when comparing strings. ठीक है, तो हम लोग एक नया बनाते हैं इनम्स। इनम्स डॉट जावा। psvm। तो enums equals to enumerations, a special kind of class that represents a fixed set of constants। Set of constants। Hmm, they improve they improve code reusability and are easy to maintain। और भाई चलेंगे 15 मिनट में, 9 बजे चले। वो तुमसे बोलता है ना, तुमसे ही पूछेंगे। तो पढ़ो ना साले, क्यों तुम क्यों फिर अपनी मरवाओगे हैं उससे? पढ़ लो सच। नहीं, और एफिशिएंट with switches when comparing strings। comparing strings। तो यही है। So basically, an enum is a special kind of class ए where भगवान, we declare आवाज कैसे चली गई गाइस? बहुत इरिटेटिंग लगता है गाइस जब अचानक से ईयरफोन झुका देता है मुझे। शिवम थोड़ी सी आवाज कम कर दो। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, अब देखते हैं। constants. Here's a हाँ, 60 पे रखते हैं। 54, 60। हाँ को, हाँ सही है। हम्म, demonstration. We're so going to create a new class. File, new, Java class. We're going to select enum. Enum is a special kind of class, sort of like how an interface is a special kind of class. We will create an enum of day. Public enum day. Within this Java class, we can declare some constants. What we're going to write is enum constants. A common convention for these अबे यार parentheses, then associate तो गाइस इसने बिल्कुल ही अलग कर दिया, थलग कर दिया। तो अब हमें बिल्कुल अलग थलग कुछ कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब जाएंगे हम लोग डेस्कटॉप पे, और ये स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट हुई है, पता है। ये डेस्कटॉप है और आज लाइट बहुत जा रही है गाइस, प्लीज बेयर विथ मी, बहुत ज्यादा जा रही है।
तो डे है, और हम यहाँ एक डे डॉट जावा भी बना देंगे, ये जो हमारा नहीं चल पाएगा। फिर हम इसको डिलीट मारेंगे, सच ट्रेजेडी विथ इट। फिर हम दोबारा से नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें एसआरसी में बनाना है, तो हम यहाँ बनाएंगे डे डॉट जावा। सोर्स में बनाना है ना, डे डॉट जावा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, अब ना ठीक है। तो ये पब्लिक इनम डे होगा, इनम हो गया ये, ठीक है। Associate this constant with a value. So let's say that we're working with days of the week. Sunday will be the first day of the week. Sunday will have we're going to write is enum constants. A common convention for these constants is that all the letters are uppercase. So after the enum constant, we'll add a set of parentheses, then associate this constant with a value. So let's say that we're working with days of the week. Sunday. पहले एक बार इनम समझ लेते क्या था। A special represents a fixed set of constants. They improve codability and is easy to maintain, more efficient with switches when comparing strings. ठीक है। Here's a demo. Like how an interface is a special kind of class. We will create an enum of day. Public enum day. Within this Java class, we can declare some constants. What we're going to write is enum constants. A common convention for these constants is that all the letters are uppercase. So after the enum constant, we'll add a set of parentheses, then associate this constant with a value. So let's say that we're working with days of the week. Sunday will be the first day of the week. Sunday will have a value of 1. Let's do this with the other days of the week. Monday, parentheses, then a value. Monday will be the second day of the week. Then we'll just follow this pattern. ठीक। And all these constants with a semicolon. All right, we have our enum constants. They have values 1 through 7. We're receiving some warnings here. Expected 0 arguments, but 1 found. What we need to do is create a constructor. A constructor for our day class. When we define these enum constants, we're automatically going to call the constructor for this enum class, and then pass in this value. Let's create a field of day number for days of the week. We'll make these values private. We'll use the private access modifier. We don't want the ability to change them. We'll make them final. These are integers, that's the data type. We'll name these values day number. When we define these enum constants, we're automatically going to call the constructor, and then pass in this value to the constructor. For the parameters, we'll have int, then our field of day number. This dot day number equals the day number that we receive. If you would like, you can add a getter method to actually get the day number. We'll use the public access modifier. We're returning an integer. We'll define a method of get day number. And we will return our field of this dot day number. All right, and we have set up our enum class. Reading and understanding these enum constants is a lot easier than these numbers. If I was looking at the number 5, I would have trouble understanding that means Thursday. Now, how do we work with these enum constants exactly? Here's how. पहले इतना नोट कर लेते हैं हम लोग गाइस, जो भी इसने बताया। ये बेसिकली बोल रहा है ना, इनम कांस्टेंट जो है उनके लिए कंस्ट्रक्टर होना चाहिए हर नंबर के लिए। जो भी कांस्टेंट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कांस्टेंट है। इनके अंदर लिखा हुआ नंबर कांस्टेंट नहीं, ये कांस्टेंट है। तो इनके लिए हर के लिए एक नंबर होना चाहिए, फिर एक जो वैल्यू होनी चाहिए जो जिसके जो कंस्ट्रक्टर से हमें मिल जाए हर एक को डिफाइन करने के लिए। तो अब हम क्या बोलते हैं, जिससे ये जो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 ये हर एक को डिफाइन कर सके। ओके, नाउ व्हाट फ्राइडे का 6 है, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं अपने डे डॉट जावा में। तो पहले मैं लिखूंगा कैप्स लॉक में मंडे 1, फिर लिखूंगा मैं ट्यूसडे 2, फिर लिखूंगा मैं वेडनेसडे, थिंक दिस वुड बी 3, फिर लिखूंगा मैं थर्सडे, दिस वुड बी 4। हाउ द फक इट हैपेंड कि उसको फ्राइडे 6 हो गया उसका। संडे, ही स्टार्टेड विद संडे मैन। ओके, we insert a Sunday and it's 1. Now there's a problem. इसको बनाना पड़ेगा 2, इसको बनाना पड़ेगा 3, इसको बनाना पड़ेगा 4, इसको बनाना पड़ेगा 5, है ना। और हमारा ये होगा फ्राइडे, ये होगा हमारा 6, और ये होगा हमारा सैटरडे 7। Now what we can do is, ये हो गया, इसके लास्ट में सेमीकोलन लगता है। हाँ जी, लगता है इसके लास्ट में सेमीकोलन, हर चीज के लास्ट में लगता है। अब हम करेंगे ओके, प्राइवेट फाइनल इंट डे नंबर। प्राइवेट, इसमें प्राइवेट होगा, फाइनल होगा, इंट होगा डे नंबर, ताकि दोबारा से चेंज ना हो सके। और एक कंस्ट्रक्टर होगा डे कंस्ट्रक्टर, और ये लेगा इंट डे नंबर। वाह,
इंट डे नंबर, देखो डे नंबर से कांस्टेंट डिफाइन हो रहे हैं, और दिस डॉट डे नंबर विल बी गिवन डे नंबर। वाह। पब्लिक इंट गेट डे नंबर, एक ये मेथड है, पब्लिक इंट गेट डे नंबर, रिटर्न दिस डॉट डे नंबर। रिटर्न रिटर्न दिस डॉट डे नंबर। सो ये हमारा इनम बन गया है, बहुत अच्छा इनम बन गया है। सो पहले कैमरा उड़ाता हूँ मैं, ये आई डोंट लाइक सीइंग माई सेल्फ दिस लाइक दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब देखते हैं हमारी चैट चल रही है, नहीं चैट आ गई। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, Our main Java file, we will create a day object by using this enum class. Let me delete this. क्या क्या लाइफ में आके कैसे हाँ, ना उससे, नहीं नहीं उससे आता नहीं है, कुछ नहीं आता उससे। बजा सकते हो, तुम्हारी आवाज कम रहती है, उससे नहीं आता, जब आवाज बहुत कम रहती है नहीं आता। उस दिन वो कुछ ना फालतू का पकड़ा, जैसे कुछ साउंड नहीं होते, बहुत लोफाई टाइप के बीट्स होते हैं, यूट्यूबर्स लोग डाल देते हैं, ये लोफाई बीट है, ये वो लोफाई बीट है, टेन टनैंग टनैंग टनैंग, उसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है, तो वो जरा सा पकड़ता है तो फिर कॉपीराइट बोल देता है। तो तुम्हारे वो वाले बॉलीवुड वाले गाने से नहीं, उसमें लोफाई वाले तो, लेकिन उन लोगों ने भी अच्छा कर रखा है कि कंटेंट यूज कर सकते हैं उस गाने का, जो भी बीट्स था, तो अलाउड है, और आएगा भी कॉपीराइट, तो मोनेटाइजेशन पे इफेक्ट नहीं होगा, वीडियो कोई भी देख सकता है मेरा। ऐसा कुछ नहीं, बजाओ यार गाना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो 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 चलो, आगे आगे, बस 2 मिनट इसको बस खिलाओ। Day. Rather than saying new day and then passing in a number like 1, there's a different approach. बस 5 मिनट में चल रहे हैं, अकेले कैसे, इतने तो लोग हैं बात करने के लिए। We will access the day class, dot, and then specify a constant. इतने तो लोग हैं बात करने के लिए, तुम्हारी सब मोहतरमा बिजी हैं? अच्छा। And then passing in a number like 1, there's a different approach. We will access the day class, dot, and then specify a constant, a day of the week. Let's say Sunday. Remember that this is all caps. Our day is an object. अच्छा, Let's output our day and see what it outputs. This will output Sunday, all caps. Day. Rather than saying new day and then passing in a number like 1, there's a different approach. तो We फिर will क्या access होगा? the day class, dot, and then specify a constant, a day of the week. Let's say Sunday. Remember that संडे। this is all caps. Our day is an object. Let's output our day and see what it outputs. This will output Sunday, all caps. If you would rather get the day तो number, the value that's associated with the enum constant, then we can use that getter method. Day.get day number. So अच्छा, we have Sunday and 1. Where this is really going to be helpful is when working with switches. Here's a demonstration. We will actually use an enhanced switch. What are we examining? We're examining our day object. If our day matches a case of Monday, now this isn't a string. If this were a string, we would enclose this within a set of quotes. But using enums within a switch is actually faster than using strings. If it's Monday, then we'll output the following. We'll use an arrow because this is an enhanced switch. Then we'll output it is a weekday. Then if we have a case of Tuesday, we just copy this. Tuesday will also output it is a weekday. You can actually combine these cases together too. You just have to comma separate them. So case Monday, comma Tuesday, do this. Then let's do this with the other days of the week. Just for readability, I'll put these on new lines, each of these cases. So we have Wednesday, Thursday, तो हम भी साइड बाय साइड कर लेते हैं कोड गाइस, आगे जल्दी हो जाए। ओके ओके, सो ऐप डॉट जावा डे डे इक्वल्स टू डे, क्या था ये, कैसे डिफाइन किया, डे डॉट संडे। अच्छा अच्छा, ये संडे वाली डेट डिफाइन करिए, पहले इसको बंद करते हैं, क्यों खुला ये। हाँ, अब इसको जाते हैं, डे डॉट संडे, डे डॉट संडे, शायद ये स्टैक, अरे हाँ, तो ये डे डॉट संडे डिफाइंड हो गया। ठीक है, कुछ स्टैटिक टाइप का हो रहा है इधर, तो
स्विच स्विच डे, तो ये क्या होगा? केस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हाँ, ये इसमें क्या हो जाएगा? सिस आउट इट इज अ वीकडे। ये भी अच्छा सीखा भाई। केस सैटरडे संडे सिस आउट इट इज अ वीकेंड। वीकेंड, ठीक है। अब डिफॉल्ट सिस आउट इनवैलिड डेट, है ना? These are all the weekdays. Monday we output. It is a weekday. And if it were, let's तो अब चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं। इट इज अ वीकेंड, सही चल रहा है गाइस। चलो मैं खाना say खाने जाऊंगा Wednesday, थोड़ी देर में। then instead we output. It is a weekday. If we were comparing strings, all these cases would be enclosed within a set of double quotes, kind of like this. हम्म But we don't need to do that. It's actually more efficient to use enums. For some practice, what we'll do this time is accept some user input. We'll need a scanner. Scanner equals new scanner. नहीं नहीं भाई, कर Week. लेंगे I बाद will में। type Monday. Input ओ uppercase. When creating a day object by using the enum class, we will use our response. We will use the value of method and then pass in our response. तो अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली एक और वे है, डे डॉट वैल्यू ऑफ सैटरडे, ठीक है। अब भी चलाऊंगा तो चल जाएगा, ऐसे हम यूजर इनपुट भी ले पाएंगे। इट इज अ वीकेंड, अब भी चल रहा है, ठीक है। मैं मंडे भी कर देता हूँ, नहीं फ्राइडे कर देता हूँ, फ्राइडे में वीकडे आएगा। फ्राइडे तो अब भी करेंगे तो वीकडे आएगा, ठीक है। जैसे अब सैटरडे में बदलूंगा, सैटरडे, तो क्या आएगा? वीकेंड, ठीक है भाई। गाइस चल गया, बाद में ले लेंगे यार यूजर इनपुट। Now we should be able to type in a day. Enter a day of the week. I will type Monday. It is a weekday. Let's run this again. I will type Sunday. It is the weekend. What if we type in a day that doesn't exist, like pizza day? Well, we get an exception, an illegal argument exception. We can catch that exception using a try and catch block. Any dangerous code, we're going to enclose within a try block. We will try बाद में भाई, बाद में खाना खाना बाद में। चलो गाइस, आता हूँ ब्रेक से।
तो गाइस वापस आ चुके हैं हम लोग। और सॉरी थोड़ा ज़्यादा ब्रेक हो गया। मैं थोड़ा चला गया था बाहर खाना खा के टहलने। मैं अब इसका ज़्यादा ट्यूटोरियल का हमारा बचा नहीं है। तो जो इसने किया है ना वो भी हम लोग कर लेते हैं अपने इसमें। तो कैसे होगा ये बता रहा हूँ। तो स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन है ना। अब हम लोग क्या बनाएंगे इधर इधर प्रिंट कर देंगे sys out enter the enter a day of the week day of the week string response is equals to scanner dot next line to upper case। तो import java सही ठीक है। और रिस्पॉन्स का हमने इस्तेमाल कर देना है रिस्पॉन्स ठीक है। अब इसमें ट्राई कैच इंप्लीमेंट कर ट्राई कैच का डिफॉल्ट यूज कर लेता मैं तो डिफॉल्ट किया है उससे भी चलेगा। कर लेते हैं यार इसने बोला है तो इलीगल आर्ग्यूमेंट भी आ जाएगा। हमें फिर क्या होता है मैंने इसको लिया जस्ट कॉपीड इट ट्राई काफी समय से ट्राई का इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये आ गया कैच इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन ई है ना। तो हमारा हो जाएगा सिस आउट प्लीज एंटर अ क्या है प्लीज एंटर अ वैलिड डे ठीक है। अब चला के देखते हैं। मैं डाल दिया पिज्जा डे। कैच तो लगाया था यार। कैच लगाने के बावजूद नहीं हुआ। मैंने डाला पिज्जा डे। क्या हो रहा है यार। यही तो है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। पता नहीं आप कैसे नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा मेरा। नेवर क्लोज ठीक है यार उतना तो। स्कैनर डॉट
नॉट क्लोज, ये भी हो गया। फिर मैं जब पिज्जा डे एंटर कर रहा हूँ, सैटरडे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा गाइस, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। ट्राई कैच, यही तो किया हमने। स्पेस क्यों देना यार, कैच तो। छोड़ो यार, नॉर्मल तो चल रहा है ना यार, ये पता नहीं ट्रैकर्स को कुछ एरर आ रहा होगा, ये होता ही है कभी भी, मतलब जावा पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए कंपाइलर पे। बस मेरा ये है कि फ्राइडे चल रहा है, इट इज अ बिग डे। नॉर्मल चल रहा है ना, सैटरडे चल रहा है, इट्स अ वीकेंड। पिज्जा डे बाद में फाड़ में जाए। हम्म। What's going on, people? In this video, I'm going to teach you all about threading in Java. Threading allows a program to run multiple tasks simultaneously. It helps to improve performance with time-consuming operations, such as file input-output, network communications, or any other background tasks. Any code that is considered time-consuming, we can have it run on a different thread, so that it doesn't inconvenience our main program. There's two options to creating a thread. Option 1 is to extend the thread class. This is the simpler option, but it's limited. Option 2 is to implement the runnable interface. This option tends to be better, because by extending the thread class, we're limited to single inheritance, but by implementing the runnable interface, that's one way around that. In this demonstration, I'm going to show you option 2. It's actually अच्छा, तो हम पहले बना लेते हैं थ्रेडिंग का। really not that more difficult than option 1, and it gives you more possibilities. I'll give you a demonstration of why threading is useful. In this program we're about to write, let's say it's a game, or a quiz or something. A user has 10 seconds to respond, and if they don't, time's up. Currently we have one thread. We're running our program on what is known as the main thread. Without using any other threads besides the main thread, I might write my program something like this. We'll start with the scanner because we'll be accepting user input. Scanner scanner equals new scanner. Pass in system.in. पहले थ्रेड का डेफिनेशन लिख In देता this हूँ। program we're about to write, let's say मैं क्विज बना देता हूँ, क्विज ऐप। क्विज ऐप। ठीक है, हम आ गए इस पे, ऐप डॉट जावा पे। ठीक है, इसी पे लिख देना है। ठीक है, हम पहले देखते हैं क्या। चलो पहले यहीं लिख देते हैं, उसके बाद कॉपी पेस्ट मार लेंगे। थ्रेडिंग इक्वल्स allows a program to run multiple tasks simultaneously. Helps improve performance with time consuming operations. Helps improve performance with time consuming operations. एक मिनट गाइस।
किसी का कॉल आ रहा है, दीपिका कॉल, दीपिका कॉल पीएचडी। ना कौन सा हमारा वो पहले से याद हो, पहले कहा था कौन नहीं पहले का भी कहा है। तो गाइस, हम लोग आ जाते हैं वापस अपने इस पे, और फाइल आयो, नेटवर्क कम्युनिकेशन, communication for any background task or any background task हाँ, ठीक है। तो अपनी चैट टॉगल कर लेता हूँ, ये हो। क्या वो इंटरव्यू नहीं, वो मैंने सॉल्व कर ली भाई, मैंने कॉपियों से किया है, वो बिना कॉपियों से कोई नहीं पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ कॉपी यूज करना ही पड़ेगा, वो और कोई चारा ही नहीं इसके लिए। हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। मैंने मैंने बहुत ट्राई किया बिना, चलो वो ही नहीं किया। नहीं तो एक उससे ले सकते हैं, एक देखो एक वो ले सकते हैं जो कम वो आर्ट से कर सकते हैं, आर्ट से, लेकिन आर्ट से करने में ये प्रॉब्लम है कि हमारा हाउ टू क्रिएट थ्रेड, extend the thread class, बिना option 1, extend the thread class, simpler, option 2, implement the runnable interface better। ठीक है, implement the runnable interface and better। yes, it's better। okay, अब क्या करना है? A simpler option, but it's limited. Option 2 is to implement the runnable interface. This option tends to be better because by extending the thread class, we're limited to single inheritance, but by implementing the runnable interface, that's one way around that. In this demonstration, I'm going to show you option 2. It's actually not that more difficult than option 1, and it gives you more possibilities. I'll give you a demonstration of why threading is useful. In this program we're about to write, let's say it's a game, or a quiz or something. A user has 10 seconds to respond, and if they don't, time's up. Currently we have one thread. We're running our program on what is known as the main thread. Without using any other threads besides the main thread, I might write my program something like this. We'll start with the scanner because we'll be accepting user input. Scanner equals new scanner. Pass in system.in. Import this class. And close your scanner when you're done with it. Scanner.close. We're going to let a user know that they have, let's say, 5 seconds to enter their name. You have 5 seconds to enter your name. We will create a prompt. Enter your name. I'll use print rather than print line. We will assign a string variable of name, use our scanner, call the next line method. And then once we have the name, we'll output hello plus the user's name. Hello plus name. So let's do a test run. Currently we don't have a timer set up. You have 5 seconds to enter your name. I can type in a name, hit enter. We display hello the name, and then the program exits. Processed finished with exit code 0. If we were creating some sort of timer, we could do the following. To make this simple, we could use a for loop. The for loop is going to cycle 5 times. We will have an index of I. Int I equals 1. That's where we'll start. We'll continue as long as I is less than or equal to 5. And then increment I by 1. During each cycle of the for loop, to mimic waiting for 1 second, you can access the thread class, call the sleep method, pass in 1000 milliseconds. When you use thread, that refers to the current thread that we're working with, in this case, the main thread, which is what our main program runs on. But since our thread might be interrupted, we do need a try and catch block, because this is considered dangerous code. We will try this code, where we will have our main Java thread sleep for 1000 milliseconds. And we will catch the following exception, an interrupted exception. So with our catch block, we will catch any interrupted exceptions, which we will name E. If our thread is interrupted, we will say, thread was interrupted.
In our imaginary timer, we'll need an exit condition. Let's say if our index of I is equal to 5, that means time's up. So we'll output time's up. I'm going to show you why this won't work the way that we think. We have 5 seconds to enter our name, but there's no prompt or anything. Then we get the message time's up, and only after that loop is complete are we allowed to enter our name. And then we can type in our name, we get the output of hello our name, and then the program exits. So the problem that we're running into is that all of this code is running on our main thread. We have 5 seconds to enter our name, but we can't reach that code until the 5 seconds are up, because our main thread is waiting for this loop to finish. So what we could do is create a separate thread where we're counting to 5, and our main thread is going to be in charge of accepting our user input. So here's how to create another thread. We're going to extend the runnable interface to create a runnable object. Let's go to File, New, Java class. This will be a class. We'll name this class My Runnable, or something unique that's relevant to what you're creating. My Runnable is going to implements, because we're working with interfaces, the runnable interface. If you implement an interface, it's kind of like you're signing a contract. We have to override any required methods. We need to override the run method. We need the @override annotation. Then we will override the run method, public void run. Within this run method, we're going to add any code we want to run in the background on a separate thread. ये तो बढ़िया है यार, तो बहुत अच्छा है। पहले हमें वो कोड लिखना पड़ेगा। scanner equal to new scanner system dot in. Mhm. 5 seconds to enter your name. I is less than equals to 5. एक मिनट गाइस, हम वापस आ चुके हैं गाइस। सही है। अच्छा, ठीक। thread dot sleep 1000 else catch, else नहीं, इसमें catch होता है बेटा, catch होता है इसमें, catch interrupted exception, interrupted exception e sysout thread was interrupted.
If I is equals to 5, sys out थैंक्स अप। ठीक है, बिल्कुल। interface to create a runnable object. Let's go to File, New, Java class. एंटर योर नेम्स ओके ठीक है। sys out out sys out enter your name sys out enter your name नेम नेम ही होगा शायद, हाँ स्ट्रिंग नेम, हाँ स्ट्रिंग नेम है इधर गाइस। स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन sys out हेलो प्लस नेम, हाँ स्कैनर नेवर क्लोज, ठीक है। स्कैनर डॉट क्लोज my runnable dot java implements runnable। ठीक है, पहले ये चला लेते हैं। हेलो वेंकटेश, ठीक है, लेकिन 5 सेकंड तक एंटर ही नहीं करने दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? So what we could do is create a separate thread where we're counting to 5. And our main thread is going to be in charge of accepting our user input. So here's how to create another thread. We're going to extend the runnable interface to create a runnable object. Let's go to File, New, Java class. This will be a class. We'll name this class My Runnable, or something unique that's relevant to what you're creating. My Runnable is going to implement, because we're working with interfaces, the runnable interface. If you implement an interface, it's kind of like you're signing a contract. We have to override any required methods. We need to override the run method. We need the @override annotation. Then we will override the run method, public void. कितनी वॉइस है, चेक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा है। ना सही है। 53 48 59 54 50 60 60 सही है। Run. तो क्या हो जाएगा ये? @override डालना पड़ेगा। @override public void run। अब यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं, एक कोड कॉपी कर लेते हैं। मुझे लगता है यही करेगा यार बंदा। मैं देख लेते क्या करता है। Within this run method, we're going to add any code we want to run in the background on a separate thread. Going back to our main Java file, we're going to cut this loop. And then paste it within the run method. When we call this हाँ सही है। run method, we'll have this countdown timer running in the background on a separate thread. Any code you want to run on a separate thread, place within the run method. All right, going back to our main Java file, we'll tell the user they have 5 seconds to enter their name. We have our class of MyRunnable. We will create a MyRunnable object, or whatever it is that you named this class.
Let's say my runnable will be the name of the object equals new my runnable. We will take this runnable object, pass it into the constructor of the thread class. Here's where we're going to create a new thread. Thread equals new thread. Pass in your runnable object as an argument to the thread constructor. Now we just need our thread to start. You'll take your thread, call the start method, and this should work. Let's try it. अच्छा ऐसे ही बाप रे my runnable my runnable runnable equals to new my runnable. ठीक है फिर थ्रेड का भी बनाते हैं थ्रेड थ्रेड equals to new thread my runnable well थ्रेड डॉट स्टार्ट अच्छा ऐसे ही हो जाएगा थ्रेड डॉट स्टार्ट से थ्रेड डॉट स्टार्ट अच्छा वो क्यों नहीं रहा हाँ अच्छा 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 थ्रेड डॉट स्टार्ट थ्रेड डॉट स्टार्ट वाह टाइम्स अप लेकिन फिर भी एंटर करने दे रहा है You have 5 seconds to enter your name, and we get that prompt of enter your name, but I'm not going to type in anything. We get the message time's up because we ran out of time. Let's try it again. I'll type in my name this time. There we go. We get our output, hello bro. Then we get the message time's up. Both these threads are running at the same time. The code within our run method is running on a separate thread. It's running in the background while our main program is running, so that's why threads are useful. So let me extend this time. Let's say 10 seconds. If I is equal to 10, just to give us some more time. You have 10 seconds to enter your name. Now, check this out. You have 10 seconds to enter your name. I'll type in my name immediately. We get the output hello, whatever your name is, but the program is still running because that's ब्रो ये अच्छा था ब्रो ब्रो कूल है भाई वैसे ब्रो कूल वाला है ब्रो डाल देते हैं सीधा नेम माय नेम इज ब्रो हेलो ब्रो टाइम्स अप second thread is still running in the background. Our program doesn't exit until all threads are done. If your main thread is done, you can end all other threads, but you'll want to set those threads to be what is known as daemon threads. A daemon thread will end put hello, whatever your name is, but the program is still running because that second thread is still running in the background. Our program doesn't exit until all threads are done.
If your main thread is done, you can end all other threads, but you'll want to set those threads to be what is known as daemon threads. A daemon thread will end when the main thread is over. We will take our thread, call the set daemon method, pass in true. This thread is going to end as soon as our main thread is finished. Let's try it again. अच्छा, thread dot set daemon true। तो अब हम लोग चला के देखते हैं। फिर से करते हैं, इससे पहले ही टाइप कर लूंगा मैं, वेंकटेश। वाह, वेंकटेश। हाँ, You have 10 seconds to enter your name. I'll type in my name. We get our output, and then our program exits without saying time is up. Processed finished with exit code 0. That's because we set our second thread to be a daemon thread. It ends when the main thread is over. Now, on the other hand, let's say that we wait for time to be up. We wait the full एक और बार चेक करते हैं, इससे रेस लगाऊंगा मैं आज। सही। मैं तो हर बार जीत रहा हूँ गाइस। है 10 seconds. Time's up. Our program isn't over yet. We're still waiting for user input, and I can still type it in. Hello, bro. Process finished with exit code 0. Optionally, what you could do to get your program to exit, go to your runnable class. Wherever you would like your program to exit, when seconds equals 10, that's where I would like to exit. To exit the program prematurely, I can access system, call the exit method, pass in an exit code of 0. That will end the program. All right, let's try अच्छा, ये भी कर सकते हैं। एग्जिट 0। ये सही था। this again. You have 10 seconds to enter your name. I'm not going to type in anything. I'm just going to wait for the full 10 seconds. Time's up, and then our program exits. But that's what we want, though. The way that we've set up this program is that we want this program to exit either when we finish typing in our name or we run out of time. All right, everybody, so that is an introduction to threading. It allows a program to run multiple tasks simultaneously. It helps to improve performance with time-consuming operations. It's useful with file input and output operations, network communications, or any other background tasks. And well, everybody, that is an introduction to threading in Java. Keeping it fresh like plastic wrap, that's me. That's me. Yo, we finally made it to multi-threading in Java. Multi-threading enables a program to run multiple threads concurrently at the same time. As we've talked about in the previous lesson, a thread is a set of instructions, and they run independently from other threads. Multi-threading is useful for background tasks or other time-consuming operations. अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग। तो हम लोग एक और इसमें बना सकते हैं क्या, मेन डॉट जावा। लेट्स ट्राई। और पीएसवीएम इसमें बना दे। हाँ, एक और बना दिया है। अब हमने ऐप में लिखा था कमेंट, हमने इसमें लिखा है, तो इसमें हम कर देते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग हमारा enables a thread enables a program to run multiple threads concurrently. To run multiple threads concurrently.
Thread is equal to set of instructions that run independently. Thread is equals to a set of instructions that run independently. Useful background tasks or time-consuming operations. Useful for background tasks or time-consuming operations. In the prior lesson, we've learned that there's two ways to create threads. We can either extend the thread class or implement the runnable interface. The second option is better in most cases because we're not limited by single inheritance. Here's how we can get started multi-threading. We're going to create a new class, file, new, Java class. We'll call this class myRunnable. MyRunnable will implement the runnable interface. मैं एक नया माइंड रनेबल बना दूंगा. Runnable डॉट जावा. फिर माई रनेबल ये हो. Implements runnable. If we're implementing an interface, it's kind of like we're signing a contract. We have to override any required methods. We have to override the run method. Public void run. Whatever's within the run method, this is the code that's going to perform when this thread is up and running. So what would we like to do? Just for a beginner's example, let's count to 5 using a for loop. We'll write a for loop. We will create an index of I. I'll set that equal to be 1. Public void run. Right away. We'll continue as long as I is less than or equal to 5, because we're counting to 5. Then increment I by 1. During each cycle of this for loop, I would like this thread to wait for 1 second before printing whatever I is, whatever the current count is, if we're counting. We will access the thread class, call the sleep method, pass in 1000 milliseconds to sleep for a second. We will need to surround this method with try and catch blocks. We'll catch any interrupted exceptions. But let's output the following. We'll say thread. We will access the thread class, call the sleep method, pass in 1000 milliseconds to sleep for a second. Then index of I. I'll set that equal to be 1 right away. We'll continue as long as I is less than or equal to 5, because we're counting to 5. Then increment of I. I'll set that equal to be 1 right away. We'll continue as long as I is less than or equal to 5, because we're counting to 5. Then increment I by 1. That equal to be 1 right away. We'll continue as long as I is less than or equal to 5, because we're counting to 5. Then increment I by 1. During each cycle of this for loop, I would like this thread to wait for 1 second before printing whatever I is, whatever the current count is, if we're counting. We will access the thread class, call the sleep method, pass in 1000 milliseconds to sleep for a second. We will need to surround this method with try and catch blocks. We'll catch any interrupted exceptions. But let's output the following. We'll say thread was sort E.
sysout thread was interrupted. Was interrupted. After our thread sleeps for 1 second, let's display the current count. I'll just say I. एक सेकंड पे काउंट आएगा, ठीक है। Just to keep it simple. Let's go back to our main Java file. We'll need to create a runnable object. My runnable. Let's say my runnable equals new my runnable. We have to pass in this runnable object to a thread object. Let's say thread equals new thread. We will pass in our runnable object. To get this thread to start, we have to call the start method of our thread.start method. And this should work. We'll test it. 1, 2, 3, 4, 5. And then we exit the program. चलो करके देखते हैं। My runnable equals to new my runnable. तो थ्रेड एक बनाएंगे न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट। लेकिन इससे पहले माई रनेबल तो देना, यहाँ पे माई रनेबल जो चलाएगा थ्रेड, तो थ्रेड डॉट स्टार्ट। टू थ्री फोर, वाह, 56 करना था, ठीक है। 1 2 3 4 5 Another shortcut you can do too, instead of creating a named runnable object, we can pass in an anonymous runnable object to the thread constructor. So let's copy this section, delete this line of code, and then pass in a new runnable object. This will work too, and it's a lot more concise. Now we won't have just one thread, we'll have two. So let's rename thread as thread1, copy this line of code, paste it, rename the second thread as thread2, thread1.start, and thread2.start. So now we'll have two threads running at the same time. अच्छा, इसने एक ये कर दिया तरीका। एक तो ये थ्रेड वन ऐसे, एक थ्रेड वन ऐसे बना लेते हैं, और एक थ्रेड टू इक्वल टू न्यू थ्रेड न्यू माई रनेबल, ऐसे भी कर देते हैं तो ऐसे भी चलेगा, बढ़िया। तो थ्रेड वन डॉट स्टार्ट, थ्रेड टू डॉट स्टार्ट, तो 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, वाह, 5 5।
They're running concurrently. So they both say 1, 2, 3, 4, 5. We have successfully multi-threaded. You could differentiate these by getting their name. Here's an example. To get each thread's name, we're going to access the thread class, call the current thread method, and then method chain the get name. I'll add a space plus our counter of I, just so we can see each thread by its name. ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. thread dot current thread dot get name plus And what it's counting exactly. Okay, let's try this again. अच्छा ठीक है, थ्रेड करंट गेट नेम हो जाए, करंट थ्रेड का गेट नेम. ठीक है, रन करते हैं फिर से. क्या हो रहा है? We have thread 1 and thread 0. कैसे? समझ गया. थ्रेड 0 थ्रेड 1 थ्रेड 0 थ्रेड 0 थ्रेड 1. वाह, नाइस. Thread by its name. And what it's counting exactly. Okay, let's try this again. We have thread 1 and thread 0. Now they won't always be in the same order. They're running independently. Thread 0, that's our thread 1. Java's thread 1 is our thread 2. Okay, here's an exercise. We're going to have thread 1 say ping, and thread 2 say pong, like we're playing a game of ping pong. We'll modify the myrunnable class. We'll need some text, a text variable. We'll say private, final, we don't want it to change, string, text. Then we'll need a constructor to assign it. myrunnable will have one parameter, a string of text. We will assign this.text equals the text we receive. Instead of printing our counter, we'll print our text. All right, and that's all we need. Going back to our main job. पिंग पोंग. मीम अच्छा था. मीम तो बहुत तगड़ा था, कैसे वो लोग पिंग पोंग खेल रहे थे भाई. कहाँ से खेल रहे थे भाई, वो आप भी देख लो. अच्छा मीम था भाई. फाइनल एंड फाइनल स्ट्रिंग टेक्स्ट. my runnable string text. तो एक ही बार मिलेगा, दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट. हाँ, तो करंट टेक्स्ट को टेक्स्ट मिल जाएगा जो पास होगा, जो हम पास करेंगे टेक्स्ट. ठीक है, अब क्या करना है? Instead of printing our counter, we'll print our text.
अच्छा, ठीक। All right, and that's all we need. Going back to our main Java file, we have to pass in some text when we construct a runnable object. For the first thread, we'll say ping. For the second thread, we'll say pong. वाह, पिंग पोंग, वाह अच्छा गेम बनाया। पिंग, नहीं नहीं, यहाँ पे हम कर लेते हैं पिंग, यहाँ पे कर लेते हैं पोंग। अब चल जाएगा दोनों तरीके से। अब करके देखते हैं। पिंग पोंग, पिंग पोंग, पोंग पोंग, पोंग पिंग पोंग, पोंग पोंग, पिंग पोंग। वाह, So here's what we have currently. Pong, ping, and then we exit program. Before we start the threads, let's say game start. There's one more thing I want to show you. Game start. After we start the threads, let's try and say game over. Game over. Here's what happens. Game start, game over. And our two threads are still running. Then we finish. So the problem here is that in our main thread, it doesn't wait for thread 1 and thread 2 to finish. Our main thread ends immediately. We can have our main thread wait for these threads to finish by calling the join method of each thread. Our main thread will wait for these two threads to finish. After these two threads start, we'll use each join method, thread1.join and thread2.join. And we do have to surround these with try and catch blocks. Try thread1.join and thread2.join. If our main thread is interrupted, we'll output main thread was interrupted. Okay, this should work now. Before we display game over, we're going to wait for our two threads to finish. Here's what we got. Game start, and we display ping pong. And we'll do that 5 times, and then display game over. ईयरफोन नहीं है गाइस, पर समझ आ गया क्या हो रहा है। पहले इन दोनों थ्रेड्स को होने दे रहा है, फिर बाद में अपना होने देगा। साला एक एक सेकंड में पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहा है। ये जॉइन वाला बाद में देखेंगे यार, अब क्या करें। ट्राई, डॉट जॉइन, थ्रेड टू, डॉट जॉइन। ठीक है, कैच, कौन सा एरर होगा? इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन ई, सिस आउट, थ्रेड इंटरप्टेड, थ्रेड। सही स्पेलिंग है कि नहीं? मेन थ्रेड वाज इंटरप्टेड, अच्छा। मेन थ्रेड वाज इंटरप्टेड, अच्छा ठीक है। और अब गेम ओवर, गेम स्टार्ट, गेम ओवर लिखना है। सिस आउट, गेम स्टार्ट, सिस आउट, गेम ओवर।
तो गेम ओवर यहाँ पे लिख दिया और ये हटा देते हैं, ठीक है। Interrupted. Okay, this should work now. Before we display game over, we're going to wait for our 2 threads to finish. अच्छा, ये ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा, थ्रेड ज्वाइन करवा दिया, लेकिन यहाँ पे थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट लिखना ही पड़ेगा। थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट ज्वाइन करा देंगे, लेकिन वो पहले, इससे पहले ज्वाइन करवा दे रहे हैं, ठीक है, समझ गया। बाद में फिर होगा गेम ओवर, गेम ओवर बाद में होगा हमारा, समझ गए। पिंग पोंग पोंग पिंग 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 पोंग 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 पिंग, गेम ओवर, सही है। Here's what we got. Game start, and we display ping pong. And we'll do that 5 times, and then display game over. All right, everybody, that is an introduction to multi-threading. And we'll do that 5 times, and then display game over. All right, everybody, that is an introduction to multi-threading. It enables a program to run multiple threads concurrently. A thread is a set of instructions that run independently. Multi-threading is useful for background tasks or other time-consuming operations. And well, everybody, that is an introduction to multi-threading in Java. Hey, Hi. so can you make a website using Python in 15 minutes? In 15 minutes? Impossible. It is possible. And how is that? So by using AI with Python, I can Hey, everybody, in this video, we're going to create a working alarm clock that plays music using Java. All right, let's get started, everybody. This alarm clock is going to serve as a final project for us. We'll combine a lot of concepts that we've learned throughout the series. When starting a new project, अच्छा, सारे the कॉन्सेप्ट good first step आएगा, is to declare all your लेकिन यार फिर भी variables अब or other objects प्रोजेक्ट की जरूरत that नहीं you can है run this मुझे, program. We'll begin with the standard because we'll क्योंकि be using user input. A user is going to क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया, अभी हो गया मेरा कोर्स, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो हम अभी रखते हैं, ठीक है। कभी और, तो ये आज के लिए हो गया हमारा, और बेसिकली कोर्स भी हो गया हमारा, कभी बाद में खुद से देखेंगे प्रोजेक्ट।